नौजवान अफसाना निगार जव्वाद गुल की गुफ्तगू और उनका अफसाना आपने सुना। प्रोग्राम अफकार आप सुनते हैं हर हफ्ते शाम 6:30 बजे FM 93 रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। सामने लिए चलते हैं आपको पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, जहां पर असर हाजिर के फन्ने मुसव्वरी के हवाले से सलवत अली की किताब मेकिंग वेव्स की तकरीब रूनुमाई मुनाकिद हुई। आपको बताते चलें कि मेकिंग वेव्स ऐसी किताब है जिसमें सलवत अली ने असर हाजिर के नौजवान मुसव्वरों के फन और इस हवाले से तहरीर करदा मज़ामीन को मुरतब किया है और खास तौर पर नौजवान मुसव्वरों के काम का इस हवाले से अहाता किया गया है कि आज की आर्ट गैलरीज में क्या नुमाइशें मुनक्किद हो रही हैं और इन नुमाइशों में जो काम है उसके रुझानात क्या हैं और खास तौर पर इन रुझानात के पसे पर्दा क्या मौज़ूआत हैं। मेकिंग वेव्स की तकरीब रूनुमाई के मेहमान खुसूसी थे वफाकी वजीर बराए टेक्सटाइल इंडस्ट्री मखदूम शहाबुद्दीन। इस मौके पर मारूफ मुसव्विरा मोहतरमा सलीमा हाशमी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किताब से जाहिर होता है कि तजुर्बात का सिलसिला आज भी जारी है और इस दौर में माशरे के मसाइल को समझते हुए उनका हल तलाश करना जरूरी है। हम कहीं भी हों, हमें इस ग्लोबल विलेज में रहते हुए इनको समझना है। Salwat Ali in her preface to the book aptly explores the context of the Asian artist today, and she sets the stage for the Pakistani artist's practice by linking it to the larger framework of societies and countries coming out from under the colonial burden, and they're rummaging in the past while setting their sights on the landscape of the world. I think the author is chosen intelligently, in my opinion, to be quite straightforward about it. The group exhibitions have been, which initiate fresh directions, have come first, and they are, after all, the cutting-edge panoramas. And like the shows Lines of Control and Double Take. And then the chapter after that extends the category to those who are similarly extending definitions of art making, taking in technology, architectural drawings, new materials and processes of fabrication. Salwat Ali has made a brave beginning. She deserves our thanks. मोहतरमा सलीमा हाशमी का कहना था कि सरवत अली ने तज्जिया किया है कि आज के इन मुसव्वरों ने मुआशरे को किस अंदाज और किस पहलू से देखने की कोशिश की है और सरवत अली ने इस किताब की तालीफ में अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ की हैं। मेकिंग वेव्स पर गुफ्तगू करते हुए मारूफ नाकिद डॉक्टर अर्जुमंद फैसल ने कहा कि ये किताब बहुत दिलचस्प जखीरा है। ये एक ऐसी किताब है जो कि असर हाजिर के आर्ट का मजमुआ है। इस किताब में नए आर्ट फॉर्म्स का अहाता किया गया है और मुझे इस हवाले से पाकिस्तानी आर्ट में तनव्वो और मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर फनकारों के काम पर फख्र महसूस हुआ है। Looking at the book, one can get surprised by the level of representation and representational art that is so significant in all the contemporary paintings that are presented. The works are beautiful, and as I browsed more and more, I felt proud about the variations and variety in art in Pakistan, their aesthetics and sophistication, and how together as a totality it represents the new art forms. It is very satisfying to see all this together. In the artworks presented in the Making Waves, representational imagery is strong, and use of human figures as the means of conveying of social constructs or political constructs or even spiritual constructs stands out very clearly. The book very interestingly tried to convey about the culture of Pakistan, where artists in many ways are talking about universal themes. And as all people are based in their culture, one can clearly see how artists in Pakistan are connected to their culture and through their culture are talking about the universal ideas that they are experiencing. I don't find any confusion. We live in a global environment, and so we have to look at each other's interests with open hearts and minds. Otherwise, we are going to blow each other up. The book is a dynamic representation of what's going on in Pakistan. It is very important for all of us involved in art in different ways
to break our stereotype image in the Western world. This book could be an eye-opening for those people who have the ability to see. And yes, there are people who have open eyes. I'm sure that work like these will continue to grow the interest as people learn more about new art forms in Pakistan. It is inevitable because the quality is here. Something unique is here in the book because it is so involved in localized cultural experience, yet it is approachable for people in the international world that we all live in now. डॉक्टर अर्जुमंद फैसल का कहना था कि इस किताब के जरिए पाकिस्तानी फन और सकाफत का बाआसानी और बगौर मुशाहदा किया जा सकता है। हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के एहसासात और जज्बात को समझना होगा। बसूरत दीगर माशरती इंतशार का खदशा बदस्तूर रहेगा। ये किताब उन लोगों के लिए एक आंख की सूरत साबित होगी जो देखने और समझने की सलाहियत से मालामाल हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की डायरेक्टर विजुअल आर्ट मोहतरमा मुसर्रत नाहिद इमाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म की तकरीबात से फनकार न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर मिल बैठते हैं बल्कि उन्हें एक दूसरे के ख्यालात समझने का भी मौका मिलता है। मेकिंग वेव्स बाय मिस सिल्वत अली, ऑथर ऑफ मेनी वैल्यूएबल पब्लिकेशंस, in particular under the umbrella of Format Trust, is indeed an undertaking of a decent stature. Though it is a compilation, documentation of her articles, reviews and interviews already published, yet putting it together in a sizable publication is commendable. Here, I would like to pay tribute and remember Sayyid Ali Imam, an eminent painter, teacher, collector and critique who had been collecting these clippings to safeguarding them for posterity which are otherwise lost. He has been extremely insistent that we must preserve them for reference before these are gone and lost, as there was hardly any substantial publication on Pakistani art then. I see Ali Imam Sahab peeping through this publication. Indeed, it is a big compliment. Had he been living today, he would have commended the initiative and the effort. The book is primarily dealing with the contemporary trends being practiced by a visual artist. It includes almost every medium, from painting to miniatures, sculpture, printmaking, drawing, mixed medium, video art, etc., etc., etc. She has also touched upon the need to strengthen varied institutions and faculties in the sphere, and I quite agree with her on this particular aspect. तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए टेक्सटाइल इंडस्ट्री मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा कि फन का मतलब एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप तमाम सवालात के जवाबात तलाश कर सकते हैं। Now there are two ways of containing this. A, with your art, you can do a lot. B, spiritualism. These are the two tools that. So spiritualism, I think is more effective. You can get the results quicker because, art, is meant for a certain class. So I'm really glad that there's a creative effort going on, and that too in the form of art. And I wish you all the very best. But I still say, sir, that absolutely I don't understand art, and especially modern art. I just don't understand. Not that I have no taste for it. Because, let me make a confession over here. I just don't understand Picasso. I just don't understand. And I just keep on asking the artists, what is so unique about it? At times certain figures that he makes, they're so repulsive. And I don't understand that. And yet, he is not, I don't know what to say about him, the most celebrated artist. Heartiest congratulations to the lady who's done this compilation work. I wish she'd been here, and the way I've been introduced to her, and she's done a wonderful job. Thank you very much indeed. इसके साथ ही प्रोग्राम अफकार अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हामिद ज़हूर को अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।